या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आज्ञां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतम्। गतवर्गद्वये अस्माभिः संस्कृतभाषायाः वर्णमातृकाविषये पठितवन्तः। संस्कृतवर्णमातृकायां स्वराः सन्ति, पुनः व्यञ्जनानि अपि सन्ति। माहेश्वरसूत्रेषु उक्ताः नवस्वराः सन्ति, 63 व्यञ्जनानि सन्ति। स्वराणाम् अपि प्रकाराः वर्ण्यते पाणिनिना। ह्रस्व दीर्घ प्लुताश्च। एकमात्रो भवेत् ह्रस्व, द्विमात्रो भवेत् दीर्घः, त्रिमात्रो भवेत् प्लुतः च। Three matras and above are considered pluta. And ardhamatra bhavet vyanjanam. Vyanjanam only ardhamatra. So this defines the kala up to which we speak and we try to pronounce the word like a or a or e. So what is a kala? Matra kala here is the blinking of an eye is taken as a matra kala, or what I say, हिंदी में जो चुटकी मारते हैं और इसका जो साउंड होता है, दैट टाइप इज कॉल्ड अ मात्रा काल, राइट? सो ह्रस्वस्वराः एकमात्रकालिकाः सन्ति, दीर्घस्वराः त्रिमात्रिकाः सन्ति, पुनश्च प्लुतस्वराः त्रय अथवा अधिकं मात्रिकाः सन्ति। पुनश्च तेषां प्रभेदाः अपि कृताः, अनुनासिक तथा अनुनासिक च। पुनश्च सर्वेषां स्वराणां पुनः विभागः कृतः, उदात्त अनुदात्त स्वरितः। एतेषु एतानां यदा वयं विभागं कुर्मः चेत् प्रथम ह्रस्व अकारस्य यथा महेश्वरसूत्रे अ इ उण् अण् प्रत्याहारे विद्यमानम् अकारं यदा वयं पश्यामः चेत् अकारस्य 18 प्रकाराः पाणिनिना उक्ताः। तर्हि व्यञ्जनानाम् अपि प्रभेदाः वर्ण्यते। यदा खर् वर्णाः सन्ति, वर्ग प्रथम वर्ग द्वितीय तथा स श श स त्रयः षकाराणां। ये खर् वर्णाः इत्युक्ते किञ्चित् कर्कशवर्णाः, कर्कशव्यञ्जनानि सन्ति। पुनश्च हश् प्रत्याहारे ये वर्णाः आगच्छन्ति ते वर्ग तृतीय, वर्ग चतुर्थ, वर्ग पंचमः तथा च अन्तस्थाः सन्ति।
पुनः व्यञ्जनानाम् अपि प्रभेदद्वयम् अल्पप्राण महाप्राणश्च। वर्ग प्रथम वर्ग द्वितीय तृतीय वर्ग पंचमाः अल्पप्राणाः पुनश्च अन्तस्थाः अपि अल्पप्राणाः। वर्ग द्वितीय वर्ग चतुर्थ तथा षकाराः ते महाप्राणाः सन्ति। तर्हि एतावता एता अस्माभिः दृष्टं। पुनश्च यदा वयं महेश्वरसूत्राणाम् अभ्यासः क्रियते चेत् 14 महेश्वरसूत्राणि भवन्ति। कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा महेश्वरसूत्राणां विषये? अहं वदामि वा महोदय? हाँ, वदतु कृपया। सूत्रं महोदय I1। आम् आम्, सूत्रं प्रथम चतुर् सूत्राणि वदतु। 4 सूत्राणि। I1 ऋलुक् एवं I औट् हयवरट् अलम् 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 अलम्। इदानीम् आशा भगिनी वदति वा? पञ्चमात् आरभ्य दशमपर्यन्तम्। हरि ओम महोदय, नमस्ते। नमस्ते। नमो नमः। हयवरट् लण् यमंगणनम झबै घटदश जबगडदश खपत्। अलम् 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 10 पर्यन्तमेव। अनन्तरम् उषा भगिनी वदति वा? उषा शर्मा भगिनी। जी जी, कहाँ तक बोला था इन्होंने? जबगडदश वर्ग तृतीय। जबगडदश खफ छठ चट तव झब नहीं, खफ छठ चट तव फ छ ठ थ च ट तव। च ट तव। और क्या आएगा बाद में? च ट और त वर्ग कितना वर्ग कौन सा वर्ण हुए वर्गीय व्यंजन के? को च ट त द्वितीय वर्ग प्रथम हुआ है, प्रथम और हुआ है। कौन से 2 वर्ग रह गए? च ट त हो गया और क और कपय कपय। सर हल। उत्तम उत्तम। धन्यवाद। अत्र वयं पश्यामः, एकनिमिषं किञ्चित् शेर् करोमि। कोऽपि द्रष्टुं शक्नोति वा? आं महोदय। आं महोदय। अत्र पश्यन्तु, अ इ उण ऋ लृक् ए ओं ऐ औच् ह य व रट् लण् ञमङ्गणनं झभञ् घ ढ धश् ज ब ग ड दश् ख फ छ ठ थ च ट तौ क प य श ष स हल्। एतेषु प्रथमचतुर्षु सूत्रेषु वयं किं पश्यामः? चतुर्षु सूत्रेषु किं पश्यामः? फर्स्ट 4 सूत्रं स्वराः भवति। स्वराः भवन्ति। उत्तमम्। पंचमे अथवा षष्ठे सूत्रे किं भवति? अन्तस्थः मृदु अन्तस्थः। अन्तस्थवर्ण। उत्तमम्। सप्तम तथा चतुर्दश पर्यन्तं किं भवति? व्यञ्जनानि व्यञ्जनानि। अस्तु, सप्तमे सूत्रे किम् अस्ति? आशा भगिनी वदति वा? हाँ, आशा भगिनी वदतु। यमंगणनम। हाँ, एते किं भवन्ति? अनुस्वार अनुनासिक वर्ग पंचमः। वर्ग पंचमः अनुनासिक भवति।
पुनश्च अष्टम तथा नवम सूत्रम किं प्रदर्शयति? पंचम नहीं, चतुर्थ अष्ट वर्ण और नव, हाँ, चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ ध वर्ण। भ य ख ढ धश एंड 10th। दीपक महोदय, भवान् वदति वा? दशम सूत्रं किं वदति, किं प्रदर्शयति इति? अन्म्यूट् भूत्वा वदतु कृपया। किं वदामि? दशमसूत्रं किं वदति? ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ। दशमे सूत्रे किम् अस्ति? What words are, what alphabets are there in the 10th sutra? हम न अवगतम्। तीसरा वर्ण। वर्गस्य तृतीया वर्णः। that means you were not paying attention in the class. वर्गस्य तृतीय वर्ण। तृतीय स्तंभः। वर्गस्य तृतीय वर्णः। We started with swaras and अंतस्थास्, वर्ग पंचमास्, वर्ग चतुर्थाः, वर्ग तृतीयाः। इदानीम् एकादश द्वादश सूत्रयोः किं भवति? ख फ छ ठ थ वर्ग द्वितीयाः, च ट त क प वर्ग प्रथमाः। कर्कशव्यञ्जनानि। हाँ, त्रयोदश तथा चतुर्दश सूत्रयोः श श स हल् इति षल् वर्णाः उष्माणाः सन्ति। उष्माणाः सन्ति। इदानीम् अस्माभिः एकं सन्धिसूत्रं पठितवन्तः। इको यण अचि सर्वे जानन्ति, सर्वे पठन्ति, पठेयुः स्यात् इति चिन्तयामि। इति स्वरसन्धयः, स्वरसन्धेः सूत्रम्। तर्हि कदाचित् मनसि प्रश्नः आयाति वा? इक् इति स्वराः सन्ति, यण व्यञ्जनानि सन्ति। अस्तु, तर्हि केन कारणेन स्वरस्य व्यञ्जनम् इति आदेशः भवति? Because in the swara sandhi it is not a vyanjana cannot replace a swara. So what could be the reason? No, mridu vyanjanam. What I'm trying to say is, in the swara sandhi there is no question of a vyanjana. A swara can only be replaced by a swara. So why in this iko yanachi and the reverse sutram samprasarancha, they have iko yanachi and the ikah varna yana adesha bhavati punascha samprasarancha iti sutram yana iti varnaha ik adesha bhavanti. अत्र आ प्लस ई योजनेन या भवति तदेव प्रश्नमस्ति। व्यञ्जनमस्ति किल यकार व्यञ्जनमस्ति। स्वरद्वे मेलनं भवति चेत् यकारः स्वर व्यञ्जनं कथं भवति? अहं न जानामि महोदय। नमस्ते। हरि ओम्। हरि ओम्। अहं वदामि वदतु, कोऽपि वक्तुं शक्नोति। उच्चारणस्थानं इ को एणचिल य and e. If you look at that first sutram, you told no where that things are coming from the throat. That same, I think. That is why it is getting replaced. So similarly, going through your answer, I can replace a akara with a hakara, because both have the same vyanjana udgamasthana, kantha. इ अ मेलनेन य भवति। अत्र पश्यन्तु, अन्तस्थाः वर्णाः
अर्ध व्यंजनानि संति, अर्ध स्वराः संति. Ardhavena. So they are half swaras and half vyanjanas. So in the swara sandhi also they are coming, in the vyanjan sandhi also they are replaced. Just keep this in mind. Antasthaha are not only yanaha, but they are half swaraha and half vyanjanani. Ardham ardham. So they participate in both the groups. Okay, to keep this in mind. Okay. Avagatam. This is new to us. Now we Dhanyavad. are just opening the Pandora of the box what Panini has written, and this is just the first starting. Why he has written so much? And also this type of Mahodaya, can you please repeat that? तादृशं Mahodaya? प्रश्नानि तु आदौ हम भवत्याः एव सर्वेभ्यः निवेदयामि यत् सर्वे स्वेषां वीडियो उद्घाटयन्तु. So this is not a webinar, and this is an interactive varga. So we are all learning together. If I ask you, you ask me, right? So it will be better that if you keep your video on. Sir, we want to understand what is your question and what will be the answer, sir. So my question was, in the eko yanachi yana sandhi, in this yana sandhi is basically a swar sandhi, right? Ikah sthane yana syat iti adesha. So in the swar sandhi, why a swara has been replaced by a vyanjana? Correct. So hayavarat, starting from the hayavarat, it is all vyanjanani. So why swara has been replaced by a vyanjana? And there is a reverse sutra also called a samprasaran. It's called samprasaran. So again, that yana will be replaced by ik. Okay. Because these are the special characteristics that this antastaha are half swaraha and half vyanjanani. So this can be replaced, the ika could have been replaced only by antastaha and not any other swara or any other vyanjanani. I cannot replace akara with a hakara, although the udgama sthana of both are same, kantha. Okay, got it? Okay, sir. Got it, sir. Got it, sir. महोदय हाँ. तादृशं प्रश्नाः तु भवत्याः एव उदेति प्रश्नः इदानीं प्रश्नः तो उदितव्यं भवति खलु. No, not like this. No, why two swaras? Why it has been replaced by this? Vyanjanam bhavati. Till date, we are just eko yanachi sutram adhigatavantah. Tadeva. Never it struck in your mind that why it has been yana only and not any other thing. Maybe jasha or harsh. Why not? Yeah. Dhanyavad. Astu. Tari panchama varnaha, varga panchamaha, varga chaturthaha, varga tritiyaha, varga dvitiyaha, varga prasamaha, evam pushmanaha. एतादृशः वर्णः रचितः पाणिनिना. एतेभ्यः प्रत्याहाराः भवन्ति. So there are, Panini has taken about 42 or 44 pratyaharas to give about 4,000 sutras in the Panini. So 4,000 sutras. So these are the basic, or the what I say, the Adhara Stambha of the entire Panini Vyakaranam. So this has to be kept in the mind. And if I say Jash, Has and Khar, Zash, it should immediately strike to you what I am talking about. Okay? So we will just try to again for... How can that happen? We need to Which only one? keep looking at, when you give the this when you said this just for example, pratyahara, the moment you say pratyahara, it should come to the mind, but how Yes. does one make that happen? So you have to by heart the entire Chaturdasha Sutrani. Every day when you get up, you utter 5 times, and after 7 to 10 days, you will memorize the entire thing. Okay.
Now, just keep this in mind because these are the basics on which the entire Panini Vyakaranam is based on. And right, starting from the time of Panini till date, there cannot be any change or there was no destruction of the work of a monument. Say, for example, we can build of the Vyakarana. So it is still as strong as it was made by Panini. And the reason being this is the watertight sutras, this Maheshwar sutras, which are given by none other than Shiva Parameshwara himself. Shiva Parameshwara, being the god of destruction, cannot destroy his own contribution. Right? Saha sasya graham kadhapi vinashti na karoti. Atayeva uchyate yat. So these are the Maheshwara Sutra coming from Sakshat Shiva himself, and this has based the entire foundation of the entire Panini. So yes, at Natarajan Mahoday had asked if I can change this It Sangyak Varna. No, you cannot. These are as watertight and airtight it can be. You cannot change even any sutra, any anakara or any chakara with any other thing. Okay. Now you must be knowing the prakriya katham adya asmakam asmabihi pratyaharaha nishpadyante bhavantaha sarve jananti iti manye. Tari adau pashyantu Shobha Bhagini कृपया अण इति प्रत्याहारे के वर्णाः भवन्ति वदतु कृपया अ इ उ ल अत्र द्रष्टव्यं ये रक्तवर्णः वर्णिताः वर्णाः सन्ति ते इत्संज्ञकाः सन्ति एते वर्णाः सीमां निर्धारयति अनस्य तस्य लोपः भवति Adi antena sahita. So this is the sutram that defines a pratyahara. So the Adi Varna, along with all the Varnas in between, ending with the ending It Sangyak Varna, is forming a pratyahara. Adi antyena sahita. So Adi and Ant. Anta is the pratyahara. This is It Sangyak Varna. And the first Varna, what we are trying to say in this case, Ana, Akara, from Akara to Anakara. But except Anakara, we take only three, A, I, and U. Astu? Idanim, Usha Bhagini Krupya Ak Pratyahar Vishaye Vadatu. Ak Pratyahare ke Varnaha Santi. अक बोला सर हाँ अक अ इ उ ऋ लृ हाँ ऋ ल अस्तु उत्तमं पञ्चवर्णाः सन्ति इदानीं काम् आह्वयामि ओंकार महोदय अच् प्रत्याहार यदा अहं वदामि चेत् तस्मिन् के वर्णाः भवन्ति अच् प्रत्याहारे भवान् द्रष्टुं शक्नोति वा यत् स्क्रीने दृश्यमानः अस्ति इति नववर्ण अस्ति अ इ उ ऋ लु ए ओ ऐ औ किमर्थं पुस्तके द्रष्टव्यं भवति तत् मया एतत् लिखितमस्ति खलु तत् मया शेर् कृतमिति केवलम् अस्माभिः किं कर्तव्यं चेतव्यम् out of this you just have to select. Don't write, don't seek any books, don't refer any book, right? When I say Jash, it should come in your mind. Jash, hush, right? Now Hal, who will say Hal? Kartikeya Mahoday, vadatu. ह य व र
ल न म ग न नम न ज भ ग ग ध जब अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया। जब गड द क फ छ ठ थ च ट त क प स श स ह। उत्तमम्। अत्र पश्यतु षकारस्य उच्चारणं कथं करणीयं। मया पूर्वमुक्तं यद्यपि बहुनादिशे तथापि भटपुत्र व्याकरणं स्वजनः स्वजनो मा भूत् सकलं शकलं सकृत् शकृत्। तर्हि अत्र उच्चारणं कथं भवेत्। तालव्य षकार श, मूर्धन्य षकार श, दंत सकार स। ओके, स sh sh. When we are now learning Mahoday? grammar, so you have to identify the shakaras by talavya shakar, murdhanya shakar and danta shakar. Okay, shivasya shah ina vaktavyam, shanmugasya shakara iti na vaktavyam. Hello, talavya shakar, murdhanya shakar तथा च दंत शकार। अस्तु, रीटा महोदय भवतीं प्रष्टुं शक्नोमि वा? इदानीमेव युक्तवती। आम् न। आं न इत्युक्ते किम्? अस्तु, सत्यासि भगिनी। नमो नमः महोदय। नमो नमः। जल 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 जा बा गा दा शा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा शा शा सा हा। उत्तम। When I say zal pratyahara, what should immediately strike in your mind? Sa is the fourth varna, vargiya vyanjanam. Then third vargiya vyanjanam, jabagadash. Then khafa shatata chatata is the second and the first vargiya vyanjanam. And ushmana. We have to target like this. वर्ग पंचमा, वर्ग चतुर्थाः, वर्ग तृतीया, वर्ग द्वितीया, वर्ग प्रथमा तथा पुष्माणः। महोदय कृपया तालव्य शकारम् इत्युक्ते शिव शकार मूर्धन्य शकार षण्मुख शकार दन्तव्य सा सीता सकार दंत सकार सह दंत सकार ओके थैंक यू धन्यवादः महोदय। भवानी महोदय प्रश्नः अस्ति वा? प्रश्नः नास्ति महोदय। यदा वयं ख फ छ ठ थ इति वदामः चेत् अत्र फ प्रायः सर्वे फ इति उच्यते। फकारस्य उच्चारणं कथं भवेत्? Not to fa, not English F, but ha, ha, ha. हिंदी भाषायामेव अस्ति। संस्कृत भाषा एव संस्कृत भाषायां host, ostha, not danta and ostha. Please do keep in mind that when we are doing an F in the English, we used both danta as well as ostha. So their udgama sthana is dantostha for the English F. But for the Sanskrita hakara, it is ha, kevalam oshtham eva. ते सर्वे कर्कश व्यञ्जनानि सन्ति किल? ख फ छ ठ थ इति कर्कश व्यञ्जनाः। महाप्राणः अस्ति, महाप्राणः अस्ति। धन्यवादः महोदय। इदानीं आशा भगिनी, खर प्रत्याहारे के वर्णाः भवन्ति? खर प्रत्याहार खर खफ छठ ख फ छ ख फ छ
ठ थ चटथ ठ चटथ कपै चटत खप छटत खप छटत कपै शशसर हल खफ छठ थ तो चट त कहाँ गया? चटतव चट शशसर और हल। हल इसको और कैसे, अन्तिमवर्णानि तो उच्चारण न इसको भवति और कैसे जानेंगे? इसका इसको दूसरा प्रकार जानेंगे कैसे है? व्यंजन व्यज्ञीय हाँ, व्यंजन अनेकोऽपि मा वदतु, आशा भगिनी वदतु। द्वितीय वर्ण प्रथम वर्ण ऊष्माण केवलं कर्कशवर्णः, खरवर्णः कर्कशवर्णः। ओके जी खर इज केवल कर्कश When we are वर्ण doing a sandhi called kharicha, so it will be have a khar varna only. And when जी we do a visarga sandhi called hashicha, it will be have a hash or mridi vanjana. Hash will be from haya varak to jabagadash. Hash varna. Antasthaha, panchamaha, chaturthaha, tritiyaha. You keep this in mind. I'm trying to mix and match, so all you can have a idea of Ushmana, Karkasha, Alpa Prana, Mahaprana. So in every corner, you are 100% sure that this pratyahar is used where. Okay. भ्राता पंचम वर्ण will also come under हर्ष में खर आता है ना, खर में नहीं, हर्ष में बोला। मृदु मृदु अच्छा मृदु ठीक व्यंजन, है हाँ, मृदु मृदु व्यंजन व्यंजन। जब बोलो आप हर्षिचा का जो आप विसर्ग की दो संधि करते हैं ना, एक जी तो जी एक पूर्व रूप संधि जब आकार होता है विसर्ग के पहले और बाद में पूर्व रूप करते हैं, और दूसरी जो मृदु व्यंजन होता है तो आप ओकार करते हैं, विसर्ग का उत्तम और गुण संधि। तो वो जो सूत्र होता है वो ये सूत्र से होता है, हर्षिच। जी हर्ष प्रत्याहार में जो आने वाले वर्ण है वो विसर्ग के बाद में हो और विसर्ग के पहले ह्रस्वाकार हो तो इसको ओकार आदेश, मतलब विसर्ग को उत्तम और बाद में ओकार पूर्ण संधि। इदानीं शर प्रत्याहार, शर, शेखर महोदय। हरि ओम महोदय। हरि ओम। शर प्रत्याहार, शल वा महोदय? र रेप, शर 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 श स। So how do we find the pratyahara in this? If I say jash or zal or ak, ik, first you have to check the it sangyak varna, last word. So if I say jash, so it sangya varna will be shakar, taleva shakar. And what will be the varnas before? You have to go. If I say ja, you have to stop at ja. So then all ja, ba, ga, da, da, these varnas are called jash pratyahar. Jhalam, zash, zashi, जष्ट्व सूत्रस्य प्रथमं सूत्रं, जष्ट्व संदेहे सूत्रं। झलां जशो अन्ते द्वितीय सूत्रं। प्रथम सूत्र जलम जसो जशो अन्ते और झलां जश झषि जशी। तो उसका अर्थ क्या होता है ये? हाँ, हम जब संधि करेंगे तो उसके साथ में हम साथ में सब करेंगे। झलाम षष्ठी होती है, जब हम विभक्ति पढ़ेंगे व्याकरण में विभक्ति कैसे होती है तो उसके स्थान में जश आदेश होता है, झल वर्ण के स्थान में जश आदेश होता है। कब आदेश होता है? जब उसके बाद में जश वर्ण हो। ठीक है, तृतीय वर्ण। हाँ, चतुर्थ और तृतीय, चतुर्थ वर्ण। जब झलाम झशो अंते,
और ये है पदांत में। पदांत में यदि झल वर्ण है तो उसको जश आदेश होता है। ये सूत्र के बगल में वो वर्णमाला का जो नहीं, वो हो गया वर्णमाला, अभी नहीं। अब 2 क्लास में वर्णमाला कर ली हमने। नहीं, अभी सूत्र से पढ़िए कैसे कर रहे हैं। मैं वो नहीं कहता हूँ कि बोलिए। इसका और उसका कोरिलेशन जो है ना, वो साथ में रखेंगे तो ही वो मेंटली वो एसोसिएट होता है ना। जैसे आपका ये अब आप वर्गीय देखिए नटराजन जी, एक बच्चा क्लास 2nd में पढ़ता है और वही बच्चा क्लास 10th में पढ़ता है, तो दोनों को पढ़ाने की तरीका सेम नहीं हो सकता। आगे मैं आपको वर्ण मात्रों का मैंने समझा दी, क ख ग घ अल्प प्राण महाप्राण समझा दिए। नाउ वी आर गोइंग इनटू महेश्वर सूत्राणी। सो वी हैव टू train our mind to read from Maheshwar Sutram only. वर्ण मातृका है वो अपने स्थान पर है, वो हम लोग को ने आइडेंटिफाई कर लिया, ये स्वर है, व्यंजन है, इसको अल्प प्राण महाप्राण बोलते हैं। लेकिन अब उसको प्रत्याहार में कैसे कन्वर्ट करें? पाणिनि ने जो बोला है कि प्रत्याहार, हर एक चीज में सूत्र में प्रत्याहार ही होंगे। अकह सवर्णे दीर्घ, अकह क्या है? प्रत्याहार है। इको यण अची, अच भी प्रत्याहार है, यण भी प्रत्याहार है और इक भी प्रत्याहार। सभी प्रत्याहार है आपको आएगा। तो प्रत्याहार इसी में से आपको मिलेगा, वर्ण मातृका से नहीं मिलेगा। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। इसीलिए मैंने आगे वाला पेज नहीं किया स्क्रॉल, इसी में मैंने फोकस किया है। सो ट्राई एंड फाइंड आउट, ट्रेन योर माइंड टू सर्च द वर्ड फ्रॉम दैट, बिकॉज we have to make the pratyaharas. अस्तु। शगुणाबेन, भवती पार्टिसिपेट कर्तुं शक्नोति वा? आं महाशय। महाशय नहीं, भ्राता शक्यते। महाशय न भवामि इदानीं। गम प्रत्याहार, गम। आप संधि पढ़े? गमुड़ागम संधि पढ़े? नहीं भ्राता, मैं थोड़ी बिजी थी, मेरे स्कूल में मैंने बहुत आज काम। नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि नहीं? नहीं पढ़ा आपने है। पहले पढ़ा है कि नहीं? व्यंजन नहीं, संधि की है आपने? नहीं पढ़ा है। अच्छा, कोई बात नहीं, छोड़। छूट गया था मेरा। ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने समझा शायद आपने की हो, इसीलिए मैंने आपको पूछा। दीपक महोदय, इदानीं लेखनं मास्तु। गम प्रत्याहारे के वर्णाः भवन्ति? गम प्रत्याहार, गमुडागम संधि। हाँ, अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया। दीपक महोदय, गम प्रत्याहार यस्मात् गमुडागम संधि भवति। गमुडागम, नमुडागमम, whatever you want to say. का प्रत्याहार है? गम प्रत्याहार। यमंगणन। गमुडागम, गमुडागम संधि किसमें होती है? गम प्रत्याहार। हाँ, अरे भाई रीटा बेन प्लीज। हयवरट लर्ण यमंगणनम। मैं गम प्रत्याहार कीधું છે અંગ અને મકાર લાસ્ટ માં હોય। ઈચ સંજ્ઞક વર્ણ will be મકાર and આદિ વર્ણ will be અંકાર, ક ખ ઘ ઘ ङ। Where you find it now? Tell me. I have kept the book open to you. Now you have to find it. भवतः स्वरः मया न सम्यक्तया श्रूयते। सर्वे सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति, श्रोतुमपि शक्नुवन्ति। सङ्गणके किञ्चित् समस्या भवति। अस्तु, चिन्ता मास्तु। अन्य कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? अहं वदामि वा? अहं वदामि वा महोदय? हाँ, सत्या भगिनी वदतु। न। हाँ, मकार इति भवति, परन्तु इत् संज्ञकवर्णः अस्ति ग ण न।
ये त्रयः वर्णाः भवन्ति तस्मात् गमुडागम सन्धिः भवति महोदय that is nga iti ucharanam Nga. karaniyam, but you said da ga iti Na, ucharanam. da, na, Ah. nga. Ah. So I have previously explained that also because we are North Indians, or to be precise, Gujaratis. So we Ucharana will be a little different from the North Indians and South Indians. So ka, kha, gha, gha, we are like anga. Anga is like we pronounce like anga. No, in South Actually, it is not Inya. anga, but ang. In South it is called Inya, sir. Inya. Nya is a Nga, chavargasya that is panchama different. varna. That is different. That is different. Chavargasya panchama varna. Savargasya panchama varna asti. Ha. Nya. So it will take time. Kavargasya panchama varna nga. Nga. Ah. Unjal. Nga. So This now, is nga. what happens in the Gamudagama Sandhi? Can Ganga. anyone explain? I can tell, sir. Tell, please. पदस्य पूर्वपदस्य अन्तिम लेटर् ज्ञ न अस्ति चेत् तस्य उपदा ह्रस्व स्वराः अस्ति चेत् परपदस्य प्रथमः वर्णः अच् अस्ति चेत् आदेशः भवति आगमः भवति आगमः भवति धातु आदेशः आदेश आगमयोः मध्ये भेदः अस्ति शत्रुवत् आदेशः मित्रवत् आगमः शत्रुवत् आदेशः मित्रवत् आगमः अस्तु पुनः पुनः वदतु भवान् शत्रुवत् आदेशः नहीं गमुडागम संधि में कैसे गमुडागम संधि ग न यत्र भवति तस्मात् पूर्वं ह्रस्व स्वर भवति तस्मात् अनन्तरं यदा स्वर भवति चेत् गमुट् इत्युक्ते ग न एतस्य आगमः भवति यदा ङकार अस्ति चेत् ङकारस्य आगमः भवति णकार अस्ति चेत् णकारस्य आगमः भवति नकार अस्ति चेत् नकारस्य आगमः भवति उदाहरणार्थ पठन् अस्ति पठन् अस्ति पठन् अस्ति अति इति भवति नकारस्य द्वित्वं भवति अत्र इदानीं भवानी भगिनी वदतु पठन् अस्ति इति तु भवती उक्तवती खलु अत्र नकारस्य आगमः कुत्र भवति नकारस्य आगमः धातोः परे भवति धातुः कुत्र अत्र पट् धातु किल पट् अधिकम् अ अधिकं न नकार अस्ति अत्र तु पठन् इति पदमस्ति आम् तर्हि कुत्र भवति पठन् पदस्य अन्ते महोदय अहं वदामि वा महोदय एक निमिषम् पठन् अस्ति तत्र एव भवति किल no please try and understand these are agamas are marked by the it sangyak varna like tit kit and mit here I said gamut agamah so ut agama it is takara asti bhavat takarasya it sangya bhavati chet tit agama asti आद्यन्तौ टकितौ अनेन सूत्रेण टकारस्य तर्हि ये टित् वर्णाः सन्ति तस्याम् आगमः आदौ भवति सो हियर इन पठन् अस्ति सो नकारस्य पूर्वं नकार स्थाप्यते नकारस्य पूर्वं वो पठन् का जो नकार है वो नकार से पूर्व अकार ह्रस्व अकार है और नकार है वो दोनों के बीच में उसका आगम है अस्तु 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 धन्यवाद So this type of agamas, there are three type of agamas: kit, tit, and mit. Will come to it. Adeshaga means that it replaced in the It replaces the particular word. Shatruvat adeshaha is like if some goon come in your home and there is only one chair available, so he just disposes you of the chair and sit in front of you. Yeah, this is called Shatruvat adeshaha. He removes you or any varna
and sit in place of him. But agamaha, it doesn't replace him. So this is agamaha is basically is called, what do I say? New varnaha. Bantha. No. This is badhakaha. This is an badhakaha of the adesha. That's what I have said. Adesha. Agama Adesha. basically is a badhakaha of adesha. Adesha replaces a particular word or varna, but agama, it doesn't replace a word. Replaces It it. just sits in front of or after. उदाहरणार्थ यद्यपि यदि अधिकम् अपि अत्र यद् अधिकम् इ अधिकम् इकार अधिकम् आकार अपि अस्ति अत्र इकारस्थाने यकारः अस्ति तर्हि स्थाने षष्ठी स्थाने योगा षष्ठी यदा षष्ठ्यान्तपदमस्ति तेषां तस्य स्थाने आदेशः भवति तदेव तत् उच्यते किल इकः यण अचि इकः यण अचि अचि is saptami is the causal because of which there is an adesha. Where does adesha happen? In which place? Ikaha is the shashti of ik. Ikaha sthane yana syat. Yana is prathama. So whatever is adishta is prathama vibhakti. Okay, whatever adesha I am making, it will always in the prathama vibhakti. And in which place I am making an adesha, it will be in the sixth vibhakti. Okay. In Vyakarana, the Sambandha and Panchami, Tritiya vibhaktis are different and not like a Sambandha, Apadana, Sampradana, iti nasti. Vyakarane vibhaktehe prayogaha vidyate. So sixth vibhakti sthani, seventh nimittam, first prathama adeshaha, panchami tasmat param, panchami param, tritiya yogaha, tutva sandhi stunashtuhu, tatha what to say? Stoho shtunashtuhu. So atra a iti vidyate khalu tritiya vibhaktau. So when a tritiya vibhakti is used, it just indicates the yoga. It can be before or after. It is not that it has to be after that particular word. Right? So, right, paravarna, purvavarna nasti atra. If a takara tavarga is either in the first, on the before or in the after, the changes will happen only in the tavarga or dant shakar, not in the shakara or shakar. Natarajan Mahoday, punar ekvaram that sixth vibhakti, what Padmavati Bhagini said, sixth vibhakti sthane saptami vibhakti? No. Shashti sthane yogaha. Shashti vibhakti asti. Tesha tasya sthane adeshaha bhavati. What will be replaced is called in the Shashti vibhakti. And what is the replacement is the Prathama vibhakti. Okay. And the reason or the cause why it is the adesha is in the seventh vibhakti. Achi pare iti agachati. Achi pare. Iko yana achi. Achi is the saptami. Saptami ach. Chakaranta shabda achi. Saptami achi. Adha jalam shashti vibhakti. Jalam shashti bahuvachanam. Jashaha. Prathama vibhakti. Jalam. Ante to iti saptami eva. Yada ante bhavati chet jasha bhavati. Padanta. And this is what? Apadanta. Mahodaya, this rule is same for all sutras, Mahodaya. Sixth, seventh, first. There are, I cannot say in the Vyakranas 100%. Prayaha.
My guru Everywhere that Soumya only. Krishnapur is always saying you cannot say 100%. Yeah. Prayah. Sir, You cannot generalize the You rules cannot of this generalize because Vyakarana you sutras. find after in 4,000 sutras somewhere Panini has written a sutra negating the particular sandhi. Sir, the rule are not, I'm not clear to see. Achi, okay. Sir, Achi means Saptami, I know. Achami is Saptami. Ikaha is Shashti. Okay. And Ikaha Yan is Prathama. Yes. So what is the meaning of this? Ikaha sthane yan bhavati. Kada bhavati? Achi pare. Yada achi bhavati, when there is an asavarna acha, ika varna pare asavarna ach bhavati chet tasya yanadesha bhavati. उदाहरणमपि वदतु bhavati uktavati खलु? न he can understand that is what we are saying. Everybody cannot since we are going somewhat Vyakarana classes. No, I am trying to be making as dull as possible by repetition, go on continuous repetition. And some person who are already done the higher level may finding little bit boring why I am going on repeating this, but it is for all of us that we should keep this in mind. That is why I am telling. यदि अधिकम् अपि अत्र ई वर्णमस्ति पूर्वपदे अकारमस्ति परपदे पदे आदौ वक्तव्यं पटलं दृष्ट्वा वदतु इक् वर्णे इक् प्रत्याहारे के वर्णाः सन्ति? इक् प्रत्याहारे इ उ ऋ ल। हाँ, तर्हि इ उ ऋ ल। तर्हि इक् इति प्रथमा, इकः षष्ठी, इकः यण् अचि. This is the bifurcation or of the whole sutra. Ikaha yan, yana is prathama, achi is saptami. So when there is an sthani, nimittam, achi is a saptami, is a nimittam of asavarna swara. And ikaha, so followed by asavarna swaraha, will be converted into yana, corresponding yana varna. And why it is asavarna? Because we already have a sandhi called akasavarne dirgha. Savarna sandhi bhavati. Savarna dirgha bhavati. Tena karanena asavarna swara bhavati atra. अस्तु, सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? यत्र कुत्रापि संशयः अस्ति चेत् इदानीमेव प्रष्टव्यः। अस्तु, उसके थोड़े एक दो उदाहरण देके ये आप समझाइए थोड़े। किसमें? ये सभी आपने बोला ना अच्छी परे ये सब में मैंने इतनी संधि तो बताई आपको। अकह, देखिए अकह सवर्णे दीर्घः, इसमें आपको अकह कौन सी संधि है, कौन सा है बोलते विभक्ति रूप आप सुनिए। अकह षष्ठी, तो आपको स्थान मालूम हो गया कि अक के स्थान में कुछ होगा। अकह कुछ होगा, समथिंग विल हैपन इन द प्लेस ऑफ अक, अक वर्ण। So aka savarne saptami, when there is followed by savarna varna, savarna swara, then dirgha, so adesha will be dirgha. Aka akah savarne dirgha, akah savarne dirgha. akah savarne dirgha. Okay. Salam jasho ante, ante saptami, jasho is jashaha is prathama, jash prathama, and zhalam shashti bahuvachan. Zhalam, chhal iti padam swikurmah pratyahar asti. Chhal.
अस्तु अवगम्यते वा सर्वैः? आं महोदय। Doing that again. Jalam Jesho Ante, in that Jalam again Shashti. Jesho it is again Jeshaha. Jesho is Prathama, and Ante is Saptami. So, Ante is Saptami. Yeah, exactly. So when Jhalam or the Jhal Varna will come at the end of a Padam, it have an optional Adesh of Jash. Yes. So when we are finding a word called Twak, so it have a two different thing, Twak and Twag. Right? Prathama Vibhakto. Twag and Twag. Jashtva Santi. Watch. Sir, Yep. how is Akaha यानी थर्ड Shashi? वर्ड हो Akah Savarne Dirgha. Akah. Akah No, how Sthane. is Akaha Shashti? हाँ अक् शब्दस्य अक् शब्दस्य षष्ठी षष्ठी विभक्ति Akah Ak is a pratyahar kakaranta shabda. Okay, now in Kakarant- our other this thing, what is the typical kakaranta shabda? Because I couldn't understand that. No, like sir, can I tell? Patat शब्द patat, patatam, patata, patate, patataha, patataha, patati, ऐसा होता है ना? So it patat. We have studied Inko, she wants to know that any other kakaranta shabda we can give an example to. Kakaranta. Okay. Kakaranta shabda. Vak Sabdam. No, what? No, that is. वाक् is चकारन्त शब्दं वाक्. Vach is chakaranta shabda. चकारन्त शब्दं. Twak will be the, I think. Okay, twak. Okay. Twaka So and that will twag. be, Twak how and does it twag. go? Twak, twachau, twachaha? చాలా వరం correct. Yes. Okay. Twacham, twacha, twache, twachaha, twachaha, twachi. Twachati, twachi. Okay. Thank you. तर्हि प्रत्याहाराणां विषये सर्वे ज्ञातवन्तः इति मन्ये। एतस्मिन् कोऽपि सन्देहः नास्ति? अस्तु, तर्हि वयं कांश्चन संज्ञाः स्वीकुर्मः। भ्राता बोलिए। वो नहीं समझ में आ रहा। क्या चीज? जो षष्ठी और पंचमी, वो आगे मैं आपको ध्यान से और भी सिखाऊंगा। ये तो कभी किसी ने प्रश्न रेज किया इसलिए मैंने उसका आंसर दिया, लेकिन वो डिटेल में हम लोग और समझेंगे। आप एक मोटा मोटा समझ लीजिए, जहां पर षष्ठी विभक्ति होती है उसके स्थान पर आदेश होता है। जैसे अकह सवर्णे दीर्घः अथवा इकह यण अचि। इकह यण अचि, इसमें इकह क्या है? इक शब्द की षष्ठी विभक्ति। यहाँ एक शब्द हम लोग ने लिया प्रत्याहार रूप से, इक प्रत्याहार है, उसमें उसकी षष्ठी हुई इकह, तो षष्ठी के स्थान में आदेश होगा। अब क्या आदेश होगा और कब आदेश होगा? अकह सवर्णे, सवर्णे सप्तमी। ये आपको हुआ कि भाई क्या कॉज है तो ये आदेश होगा। इसका कॉज क्या होगा? उसका देयर हैज टू बी सम रीजन फॉर दिस आदेश, राइट? सो बिकॉज सवर्णे, सवर्णे सति अकह दीर्घ भवति। ठीक, ओके, धन्यवाद। अभी भी डाउट है? सर धीरे धीरे क्लियर होगा, नहीं तो मैं फिर दोबारा पूछूंगी। अभी आगे बढ़ाइए आप क्लास। अस्तु। एते चतुश्चत्वारिंशत् प्रत्याहारा अथवा द्वाचत्वारिंशत् प्रत्याहारा पाणिनिना गृह्यन्ते। अत्र पश्यन्तु, अण इति प्रत्याहारे एकसूत्रं उरणरपरः इति सूत्रं भवति। येन पाणिनिना अष्टाध्याय्यां दीयते। रुल् एते, so starting from a and ka, ak, so have ak, ik and uk. There are three pratyaharas coming out the rik. So in corresponding sutrani, maybe I have given 2, 3 or reference wise, just akah savarne dirghah, iko गुण वृद्धि उगितश्च। अब गुण और वृद्धि जो भी होगी जब आप आगे पढ़ेंगे कि भाई आर्ध धातु सार्वधातु जब
आप रूप बनाएंगे धातु का तो उसको गुण आदेश या वृद्धि आदेश होता है। तो गुण आदेश और वृद्धि आदेश किसको होता है? सिर्फ एक को होता है और किसी को नहीं होता है। ई रे अल गुण वृद्धि। जैसे लिख हुआ तो लेखयति, उसको ए कहां से हुआ तो उसको इसमें सार्वधातुक आर्धधातुकयोः से गुण आदेश होता है। गुण संधि नहीं, गुण आदेश होता है। There is a difference between गुण संधि and गुणादेशः। So these are all pratyaharas. I will share the link after some time, maybe once our subject is over. These are all sutrani which corresponds to this particular pratyahara. Like hayavarat at pratyahare, there is anatva sutram. At ko vang nyum avayaye api. अणत्वम विषय सर्वे जानन्ति इति मन्ये। अणत्वम में एक सूत्र आता है अट कुम वांग नुम व्यायेपि। अट प्रत्याहार यदि होता है, कवर्ग पवर्ग होता है, आंग नुम होता है, तो भी उसमें नकार का णकार हो सकता है। अब लण प्रत्याहार में अण इण यण। यमंगणनम, उसमें से अम यम गम, ये प्रत्याहार, ये तीनों प्रत्याहार निकले और ये सब सूत्र है जो पाणिनि ने यूज किए हैं। महोदय, एक संशयः। फर्स्ट सूत्रम् अक् इति प्रत्याहारः अस्ति, तत्र ru, we are not using these two letters in any. No. If I say ak, I am telling all a, I, u, r, ak, and then ik and uk. So I am saying this, these particular varnas which is covered in rak pratyahara are all included in these three pratyaharas. Ak, ik and uk. But in Savarna Dirgha Sandhi we are using ru Dirgha Bhavati. There is no sutram for this ru Mahodaya. Why? Rukara Turya Bhavati eva. But we are saying ak iti sutram. Akka iti a, I, un, r, rik. So from starting from a, I, u, r, panchavarna. Okay. When these are followed by similar savarna varnaha, then there will be dirgha adesha. Dirgha bhavati. Astu Mahodaya. अग्रे सरामः। प्रत्याहार संज्ञा यथा मया उक्तम् आदिरन्तेन सहिता। So the आदि वर्णः स्वस्य अपि ग्रहणं करोति, तस्य यदा इत् संज्ञकवर्णाः मध्ये ये वर्णाः भवन्ति तेषाम् अपि ग्रहणं करोति। प्रत्याहारे यदा अक् इति प्रत्याहारं वयं स्वीकुर्मः चेत् अ, इ, उ, र, ल एते वर्णाः भवन्ति। केवलम् अ, क न भवति। All varnas incorporating the ak pratyahara, all are taken into account. Now, this is a common pratyahara called sup. Can anyone tell me what is sup? Subanta is different and sup is different. Namapadam Mahodaya. Namapadam. No. 7 into 321 super pratyaya. Pratyayas, not Namapadam. Namapadam is called Pratipadikam and Pratipadikebhyah Supratyayah vidyante. Nama, Linga, Vachana iti militva 7 vibhaktis are also there. These are called Supratyayah. Starting from Swaujas, these are the different
21 pratyayas starting from sun in the prathama ekvachan to sup iti prakarasya it sangyak varnah sup iti pratyayah bhavanti. एतस्मिन् एकविंशति प्रत्ययाः भवन्ति. विभक्ति वयं तस्य नाम विभक्ति इति नाम्ना ज्ञायन्ते. विभक्ति प्रत्ययाः. So Ramah, Ramau, Ramaha, it's same as sung, au, jas. Ramam, Ramau, Ramaha, Raman, Ramam, Ramau, Raman. Right? And depending on the situation, the sta, bham, bhis, and l will get different adesha. Similarly, sup and ting are called. Can anyone say what are ting? धातु मध्ये उपयोगं करोति. तिङन्त क्रियावाचक Tigandam is शब्दः also pratyaya eva. तिङ् प्रत्ययः Ting अष्टादश pratyaya प्रत्ययः. Please keep this in mind. Tigantam nasti atra. Tigantam is what ting pratyaya yasya ante asti tad padam is tigantam. But ete to pratyayah eva. Ting pratyayah. These are suffixes, all pratyayas. But tigant padam is this tiganta yasya ante asti te shabdaha tigantaha katyate. So please do keep this in mind. That is, when I say ting, it's not as tiganta. Right? Ting pratyayaha yasya ante bhavati te tigantaha. Parantu ting ityukte pratyayah kevala suffixes. So how many kati ting pratyayah santi? अष्टादश. No. अष्टादश. वदतु कोऽपि? सिप्तस्जि सिप्वस् सिप्तस्था मिप्वस्मस् तातां ज तासातां द्वम् इट् वहिमहिङ्. उत्तमम्. एतेषु आत्मनेपदी प्रत्ययाः के भवन्ति? परस्मैपदी यद् भवान् यत् उक्तं तिप्तझि सिप्तस्थ विप्वस्मस् ता आतां च थास् आतां त्वम् इट् वहिमहि अष्टादश प्रत्ययाः सन्ति. परन्तु एतेषु आत्मनेपदी प्रत्ययाः के सन्ति? ता आतं च थास् आतं त्वम्. सुब्बाराव महोदय वदति. सुब्बाराव महोदय अस्तु भवान् एव वदतु. ता आतां च तास् आतां द्वम् इट् वहिमहिङ् आत्मनेपदी. तिप्तस् ज सिप्तस्थ मिप्वस्मस् परस्मैपदी. उत्तमम्. तीतः अन्ति सीतः थः मी वहमः. That we are getting the final pratyaya after its sangya. So there is a sutram called Tanganam Atmane Padam. So tang pratyaya, after the ting pratyaya, Panini has given tang pratyaya starting from ta, takara and ending with gakara of mahing called tang. Tanganam Atmane Padam iti sanya. Now, as I said, Vriddhihi. What is Vriddhihi? Can anyone say? Bhratan, then this also will be one pratyay. Stiptasjhi, sipthastha, mipvasmas. These are parasmipadi pratyas. Ta atam jha, thas atham dhvam, it vahi mahi. These are atmanepadi pratyas. Dhanyavad. These are the original Aupadeshik Swarupam. After various Adesha and various It Sangya and everything, we will get a different Pratyaya for each Lakar. So, Vriddhi Sangya, Pratham Sangya, Vriddhi Sangya. What is a Vriddhi? Can anyone tell me what is Vriddhi? We do Vriddhi Sandhi, right? Yes, sir. Vriddhi Radhe. Aham badami. वदतु भगिनि.
आ ई उ री ल ना आ ई उ री ये ल ना ना वृद्धि ना 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 आ ई ध्यान उ से नहीं, ध्यान से आप बोलिए, क्या बोल रही हैं आप? ए ओ औ। नहीं नहीं, एक मिनट आशा जी, आप ध्यान से सोच के बोलिए, क्या बोल रही हैं आप? वृद्धि किसको बोलते हैं? जो बढ़ के होता है, ए हाँ, ओ नहीं आ बढ़ के होता है, नहीं, मैं इसीलिए मैं आपको 3 बार पूछा। वृद्धि बढ़ के नहीं, बढ़ना नहीं होता है। जो पेड़ बढ़ता है दीर्घ उसको हो हम वृद्धि जाता नहीं है। बोलते। व्याकरण में किसको बोलता है? व्याकरण में वर्ण दिए गए हैं, उसकी संज्ञा वृद्धि है। ये a group of varna are called जी, वृद्धि। A वृद्धि group of varnas are called guna varnas, and जी। so are called guna sandhi and vruddhi sandhi. So it is been replaced ए by the corresponding guna varnas or vruddhi varnas. It is called guna sandhi or vruddhi sandhi. ए ओ आई औ कहाँ ए ओ आई ओ? देखिए, वृद्धि है। वृद्धिरादेच। सबसे पहले सूत्र, पहला सूत्र क्या है? वृद्धि आत राधे ऐच। सो आकार को लिया है और ऐच प्रत्याहार में ऐ और औ। सो आ, ऐ और औ, ये 3 वर्ण हैं, वो वृद्धि वर्ण है। सो यदा वयं पश्यामः यत् वयं वृद्धिरादेच इति संज्ञा क्रियते, परंतु वृद्धिरेचि इति संधिसूत्रम्। So why vruddhi? What does it mean by vruddhi? It is not vardhanam, something is going or increasing, but it is replaced by vruddhi varnaha, or say guna, right? Adeng gunaha is called guna sangya, and ad gunaha is the sandhi sutra. It's called guna sandhi. So adeng gunaha is called hasva akara, and ekara and okara are called gunasangyakaha, gunavarnaha. So when आकार एंड आकार के बाद में यदि एक वर्ण आता है, उसके बाद में उसको क्या आदेश होता है? गुण आदेश होता है। तो समझ में आया आपको? गुण किसको बोलते हैं, वृद्धि किसको बोलते हैं? इट इज नॉट multiplying and addition, right? It is the terminology which is used by Panini to classify a set of alphabets. Okay, so here adeng gunaha. Should we say set of vowels? Here it is vowels. But vriddhi won't be used anywhere else, no? No, Vriddhi is only this. no. So मैंने इसका पहले सूत्र क्या आया? इको गुण वृद्धि, इक को ही गुण और वृद्धि होगा, उसको और किसी को भी नहीं होगा। अक में अक और उसको और कुछ भी नहीं होगा, एकार को भी नहीं होगा, किसी को नहीं होगा, केवल इको गुण वृद्धि। इक को हो गुण और वृद्धि दोनों आदेश होता है। सो दिस आर कॉल्ड गुण वर्णाः। ह्रस्व अ, ए और ओ आर कॉल्ड गुण वर्णाः, and that is why it is called guna sandhi. When we'll be doing say for example dhatu prakriya, then you will have a standard adesha. It's called sarvadhatuk ardhadhatukayoho. So in that, because of that sutra, we'll have a guna adesha, like bhu iti dhatu asti, right? Anena anantaram shap iti vikarana pratyaya, तदनंतरम टिप इति प्रत्यय लट लकारस्य। सो भू इति धातोः, भू इति धातोः गुणादेश भवति, भो इति। सो व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू भो and a and ti, after that we have an echo yavayavah sandhi which will become bhava and ti. So bhavati, right? From bhu to bhavati.
So these are all Sandhi Sutra. So what is called Sanyogaha? Halonantara Sanyogaha. When there are two varnas which can be uttered without any vowel in between, like sh, n, कृष्ण, तत्र शकार णकारयोः मध्ये कोऽपि स्वरः नास्ति. ज्ञानम, जकार ञकारः यो मध्ये कोऽपि स्वरः नास्ति, तत्र संयोगः, हलोनन्तरा संयोगः. अग्नि, गकार नकारयोः मध्ये कोऽपि स्वरः नास्ति, अतः संयोगः. संयुक्तवर्णः यदा वयं वदामः चेत् सवर्ण. किं नाम सवर्ण? सवर्ण इत्युक्ते येषाम् उच्चारणस्थानानि समानं भवति तथा च आभ्यन्तरप्रयत्नं समानं भवति. So there are two types of prayatnam, abhyantara prayatnam and bahya prayatnam. Abhyantar, basically in here we are concerned with abhyantara, which comes from inside. When you are trying to speak a word or a vowel, so we have to do something prayatna, a prayasa, right? Some effort. So that effort is called prayatna. Abhyantar, this is coming from inside, it's called abhyantar prayatna. So for to be savarna, there has to be same udgama sthana or varna utpanna sthanam, and at the same time abhyantar prayatna api samanam eva bhavati. That is why I asked the question why akara and hakara will not be savarna, because of the difference in the abhyantar prayatna. Although both have the same uchcharana sthanam called kantha, but their abhyantar prayatnam is different. Okay, so akara and hakara will never be taken as savarni. Na jhalo ek sutra hai, na ach halo. So there cannot be ach and hal can never be savarna of each other. Na jhalo. Kavargasya varnaha parasparanam savarnaha, because of the same varna uchcharana sthanam. Chavargasya varnaha parasparanam savarnaha. So these are called vargiya vyanjanan. This abhyantara prayatna. Sprishtam, all vargiya vyanjanam have sprishtam iti abhyantara prayatnam. Antasthaha have ishat prishtam. Ishat means little bit. Sprishtam is 100% touching. Ishat, little bit of touching. And sarve swaranam ushma vivrutam. When we speak swara, our mouth is open wide. Right? So it's called vivrutam. And ushmana, samana. So there has been, there are 4 prayatnas have been taken by Panini, but Patanjali in his Mahabhashya has classified 6 abhyantar prayatnam, included that bhashyakarena sha, sa, shah, ushmanaha ye varnaha santi, etesham abhyantar prayatna ishat vivrut iti bhav uktam. थोड़ा सा विवृत है, पूरा नहीं है, थोड़ा विवृत है. इसी के लिए, इसको बचाने के लिए पाणिनि ने सूत्र किया ना छलो, अच और हल के 2 सवर्ण नहीं हो सकते. ठीक है. और इसी को बताने के लिए पाणिनि ने और भी पतंजलि ने और भी उसको एक्सप्लेन किया कि भाई नहीं, ये उसका आभ्यंतर प्रयत्न हम लोग डिफरेंट कर देते हैं. तो उसका जो है विवृत था, उसको हम लोग थोड़ा और कर ईषद विवृत कर देते हैं, थोड़ा कम. थोड़ा कम. But first Panini, after that only Patanjali Mahodaya. First Panini.
Panini has given the Sutram and he has done the specifically read, he has defined 4 types of Abhyantar Prayatnam, and he has given a Sutram called Nan Jhalo. It's called Na Ach Halo. So they cannot be, Ach and Hal can never be Savarni of each other. So here, if you say the Prayatna will be same of Akara and Hakara, so they become Savarnas of each other, right? But here, because Mahabhashyam in Patanjali has changed it, so Shasha Saha will have an Abhyantar Prayatnam Ishad Vivrut rather than Ishad Sprushtam. So these are technical terms. Don't bang your head in for this thing. We will come to this when we require this in our learning process. Just keep this in mind. एतावत् पर्यन्तं तु अस्माभिः पूर्वस्मिन् कक्षायाम् एव कृतम्। कोऽपि 5 निमेषेभ्य किञ्चित् स्वीकर्तुम् इच्छति वा अवकाशः? 5 निमेषेभ्यः? आम् महोदय। आम् महोदय। 5 minutes break. If you are getting very bored of this, you can you can just go out, chill out, have a glass of water and come back. अस्तु महोदय। अस्तु। You want to continue or will to just continue महोदय? श्रोतुं शक्यते। 5 minutes break अनन्तरं 5 निमिष। No, if everyone wants to take a 5 minutes, we'll be fresh enough. Okay, everyone is now dozing off now, so it will be good that we'll take some 5-minute break. Astu, आरभामहे पुनः. Now, first sanya will take at Sat Sanya. What is a Sat Sanya? Panini as what is called a group of pratyayas in which he classified. So yasmin samaye kutrapi avashyakata bhavati chet sarvatra pratyayanam namanitya sa na svikurvanti parantu kevalam tasya sanya iti vadati. Yada sat sanya shatru shanachau iti pratyayasya bhavati. So shatru and shanach pratyaya together are called sat. So as and when Panini needs to use these 2 pratyayas, he just say sat. So you don't have to use continually shatru shanach every time. Tau sat iti sutram tena paninina sat sanya kriyate. Kasya kriyate? Dvakayoho kriyate shatru shanachau pratyayoho. So Shatru and Shanach Pratyaya is called Sat Pratyaya. So what is Sat? Can anyone tell me what is Sat? Shatru and Shanach included together is Sat Sanya. And what is Shatru and Shanacha together called? Sat Sanya. Sat Sanya. Uttam. Now, T Sanya is a very important Sanya. We need to understand it much better and thoroughly. Achontyadi T. It's a sutram called Achontyadi T. Antima Ach. Shabdasya Antim Ach Bhavati Tasmat Param. Yatra Kutrapi Varnaha Api Bhavanti Te T Sanyakaha Bhavanti. Udaharanam Yadavem Vashyamaha. Manas Sabda Pashyantu. Manas. Tatra Antim Swaraha Kah Bhavati. Manas Dipade. Antima Swaraha Kah Bhavati. Sakarah. अकारः अस्ति। Antim Swaraha. स्वरः। Sakarah. Swaraha. स्वरः। अकारः अस्ति। नकार परयोः अकार परस्य अकारः खलु नकार पर अत्र आनुपूर्वी पश्यन्तु अत्र म अ न अ स
Asya is T. Pardon? Asya is T, sir. हाँ, अस्य ए T, वर्णाः T, टी T. संज्ञकाः भवन्ति। Yeah. अचोन्त्यादि टी, अन्तिम अच ये भवति यत् भवति, तस्मात् अनन्तरं यदा यदा व्यञ्जनानि सन्ति ते सम्पूर्णं व्यञ्जनं सन्ति चेत् ग्रुप् समस्त ग्रुपम् एव टी संज्ञा प्राप्नोति। अत्र राम इति पदं स्वीकुर्मश्चेत् र आ म अ, अत्र अन्तिम स्वर अस्ति अकार। एतस्मात् परं कोऽपि स्वरः वा व्यञ्जनं न दृश्यते। अनेन अकार एव टी संज्ञक भवति। So if I tell you like in Pushpa, can anyone try write it down in a paper? Say write Pushpa. Which is the T Sangyak Varna here? Appa. Pushpa. Appa. Appa केन कारणेन भवान् लिखतु आदौ लिखतु तस्य आनुपूर्वी करोतु। उ उ श अ प उ श अ नास्ति, प उ श उषपा नास्ति खलु, पुष्पा। पुष्पा। प उ श प आ। टी संज्ञा इज आ। आ उत्तमम्। आ अन्तिम स्वर अस्ति चेत् आ आरभ्य यदा कोऽपि व्यञ्जनं सति चेत् इति मध्ये ग्रहणं भवति, परन्तु अत्र तु आ एव टी संज्ञक भवति। यदा रमाम् रमाम् इति लिखतु, रमाम्, रमा शब्दस्य द्वितीया विभक्ति। आम टी संज्ञा। आम टी संज्ञक वर्णः। आ म टी संज्ञा। अवगन्तुं शक्नोति वा? महोदय। अत्र आ अनन्तरं म अस्ति। That is why it is called am is T. आशा भगिनी, इदानीं नदी इति पदस्य टी संज्ञा का भवति? इति टी संज्ञक वर्णः का भवति? कः भवति? नदी टी संज्ञक नहीं होगा ना, क्योंकि अ से अंत नहीं हो रहा है इसका। जरूरी नहीं है, कोई भी स्वर से अंत होना चाहिए। मैंने तो नहीं कहा कि अ से अंत होगा। पुष्पा में कहा, पुष्पा में तो कोई स्वर आ तो नहीं था। अधि होगा, अधि नहीं। ई। आपको क्या देखना है? अंतिम स्वर से अंत होना है। ई सर, ई। अंतिम स्वर क्या है? नदी में स्वर है ई, दीर्घ ई। तो केवल दीर्घ ई होगा, वो ही टी संज्ञक वर्ण है। यदि ई के पर में यदि कोई भी व्यंजन होता तो वो भी उसमें ग्रहण में आ जाता, परंतु यहाँ पर नहीं है। जैसे नदीम होगा तो नदीम के बाद ईम जो है वो पूरा टी संज्ञक होगा। तो बाद में दीर्घ स्वर है तभी टी होगा। कोई भी स्वर होने से हुआ, मैंने तो नहीं कहा ह्रस्व ही होना चाहिए। अचोन्त्यादि टी, अच के बाद में जो अंतिम अंश है उसके बाद में जो जो वर्ण आते हैं वो सभी टी में ग्रहण किए जाएंगे। इसका सबसे पहला सूत्र है, आपको टीत आत्मने पदानाम टेरे, ये सूत्र आएगा कि आपको त आताम झ को ते इते अंते कैसे होता है। त आप लेंगे, तंग प्रत्याहार जो अपने पदाम बोला ना, त आताम झ, त और अ है, उसको आप बताइए इसमें त जो है तकार और अकार का मेलन है इसमें कौन सा टी संज्ञक हुआ? त और अकार है। तो सूत्र क्या कहता है कि जो टी संज्ञक वर्ण है उसके स्थान में ए आदेश हो तो अकार का एकार हो गया।
तो ते होगा, वंदते शब्द बना। तो आत्मनेपदी धातु आत्मनेपदी प्रत्यय का सबसे पहला प्रति सूत्र में आएगा टीट आत्मनेपदाम पदानाम टेरे टेहे। ठीक है, ये सूत्र जब जब आएंगे बीच में, मैं नॉलेज में आएगा तो मैं बता दूंगा आपको कहां पर इसमें प्रयोग हुआ है। इदानीं शकुन्तला महोदय भवती वक्तुम् इच्छति वा? नटराजन महोदय क्या कहना है? भवतः नाम्नः इत् संज्ञकवर्णः कः अस्ति? अन नटराजन। सर नहीं, अन है ना, नकार है उसमें, अकार नहीं लगा। वो नटराजन नहीं बोलते हैं, नटराजन ही बोलते हैं शायद। हाँ, जन बराबर है। हाँ, तो अन हलंत ठीक न है। है, लास्ट हाँ, में हलंत न है। हाँ, तो अन अ ही के आपको बाद टी न हुआ। आएगा। तो टी संज्ञक वर्ण आपको अन हुआ। वही मैं कह रहा हूँ, ग्रुप। मैंने वही कहा ना। हाँ, मैं तो आपको नहीं कर रहा हूँ, दूसरा किसी ने क्वेश्चन किया था, मैं उनको रिप्लाई कर रहा था। ओके आपने तो ओके ठीक ही कहा है। ओके ओके ओके, मेरा समझ ठीक है। नहीं नहीं, आपका समझ ठीक है। ओके। आशुतोष महोदय। Sir, actually, Natarajan is na, sir. Na is last na, sir. So it becomes No, हलंत न है last। हलंत नकार। अच्छा, okay. हलंत नकार, Natarajan. So हाँ, na is अन। okay, Natarajan. Okay. जकार के बाद में अकार है ना। Okay, जकार बाद ज अकार है। अ न। Correct. Right, sir. Right, right. तो अन है वो टी संज्ञक हुआ। Right, right. Correct, sir. ठीक है। Right, sir. आशुतोष महोदय। हाँ महोदय। शकुन्तला। आ इति टी आ, भवति। ठीक है, उत्तमम्। आ टी शब्द। सुब्बाराव महोदय भवतः नाम्नी अकार इति संज्ञा करोतु। मेरा नाम सर। हाँ, सुब्बाराव। आव इज टी संज्ञा। उत्तम। आव किस टी संज्ञा होगी? ओकार है ना लास्ट में, तो आव कहां से आया? ओकार भी तो वॉवेल है। ओकार नहीं है सर, सुब्बाराव राव। तो आप वकार लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ओकार लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप? वकार आएगा ना, वकार है। SUBBARAO सुब्बाराव। नहीं, देवनागरी में तो वो आएगा ना। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। देवनागरी में आप ओकार लिखते हैं, वह लिखते हैं। सुब्बाराव। राव। इट इज वो इज टी संज्ञा। ठीक, ओके, देन ठीक है। करेक्ट सर। अस्तु। सरिता महोदय भागं वोढुम् इच्छति वा? सत्या भगिनी। आम् महोदय। मम नाम्नी वदतु। निकुञ्जः। टी अस्ति महोदय। की अस्ति? अकार टी संज्ञा जकारस्य अनन्तरं नि जकारस्य अनन्तरं नि कथा भवति? नि तो आरम्भे एव अस्ति। किं महोदय? नि तो आरम्भे एव अस्ति, आदिवर्ण एव नकार। नकार इकार। हाँ, ओके। अन्तिम अच् का भवति? आ भवति, अनन्तरं विसर्गः अपि भवति। न, विसर्गः कदा भवति? यदा वयं सुप् प्रत्यय योजयामः। इदानीं तो सुप् प्रत्ययः न योजयामः खलु। सर, सुप् प्रत्यय योजयामः चेत् अस् नहीं, अस नहीं होता है उसको। और भी उसमें जब सूत्र लगेंगे तो आप जब आगे में विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो जो रामस जो शब्द है, रामस जो सकार है, सकार को वृत्व होकर के विसर्ग हो जाता है। ओके ओके। जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे तब तो रामः हमको आपको विसर्ग इट इज अ। So in your name also you are replaced is instead of so there is no agama here. अस्तु। समय जातः खलु व्यतीतः।
तर्हि समापयामः। ये कर्तुम् इच्छन्ति अहं कारयितुं शक्नोमि, अर्धहोरापर्यन्तं इतोपि अधिकं गन्तुं शक्नुमः। Very interesting, Mahodaya, today's class. Interesting or boring? Yeah, interesting. No, no, Mahodaya. Everyone interesting. is sleeping Thoda and boring dozing ra. off. No, it's not boring. It is interesting, sir. But Interesting only, whenever not boring. sometimes it's difficult to understand. But now So later I'm trying my best to keep it as simple as possible. And if you have any problems, doubt anywhere, you can just ask me. Yeah, Bhrata, so your name is an exception, no, from the others that we have No, done. Nikunja, ja, it is halant. If you say ja as halanta, so u will be utsa, uj will be itsange varna. Okay, utvam ho jayega. ठीक उत्तम है नहीं जी। होता। तुम नहीं होता Utvam, पहले से ही है Mahodaya, उस पे Egypt नहीं plus नहीं akaram asti. अकार ही हाँ। रहेगा ना, अकार तो रहेगा। पहले से ही Akara. नहीं अकार हो ये जाएगा। नहीं यदा भवती उक्तवती जकार अन्तिम जकार नस्ति चेत् हलन्त जकार स्यात्। कृपया मनसि धारयन्तु कृपया हलन्त्यं जकारः स्यात्। इतोपि जकार सम्पूर्ण नास्ति, हलन्त्यं स्यात् निकुञ्ज। तर्हि बहि खातायां लिखतु। उकारः किं स्यात्? भवति, उकारः। हाँ, देन् केवलम् उकार न, उज जकार अपि आगच्छति, उज 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 उज्ज अपि अच्छा, भवति, अकार के साथ ही जल होगा। उञ्ज भवति, उञ्ज। उञ्ज होगा, उञ्ज उञ्ज। हाँ, उञ्ज। अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? किं संज्ञा? उ plus j हाँ, अच्छा, j उञ्ज। plus a. उञ्ज। The last, हाँ, यदा वयं the जकार last हलन्तं swara, स्वीकुर्मः the तर्हि last उञ्ज swara भवति। and every consonant after that. j plus a. हाँ, just keep in mind that visarga and anuswara will come only with swaras, not with vyanjanas. You cannot write a halantam ka and write kam. It cannot happen. It will happen only with a swara. It can be have a kam, kim, kum, kem, but cannot have kevalam kakara. केवलम ककार एवं अनुस्वार न स्यात् कदापि, और ककार अनन्तरं विसर्गः अपि न स्यात्। सर्वदा ककार अनन्तरम् अथवा कोऽपि व्यञ्जनस्य अनन्तरं स्वरः भवितव्यमेव। तदनन्तरम् एव स्वरे एव अनुस्वार तथा विसर्गः भवति। So when you're typing in Sanskritam, I was wondering why it is not allowing me to put that anuswara on a halanta. No, it cannot, because Vyanjana cannot not have anuswara and visarga. Vyanjana is the combination of swara and. Yes, but if you take a halanta akshara and try to put an anuswara when you type in Sanskritam, it does not allow you only. Yeah. No, because technically you cannot. You cannot. Because Correct. anuswara and visarga can come only with a swara. With a swara. It can be akara, ikara, ukara, anything but swara. So typing is also teaching us the correct rules. But the rules are put into that logic, no, of that software. I'm able to type after Vyanjana, even the anuswaram over the Vyanjanam. No, that depends. And typing, how you have calibrated your typing, right? This is again Google. Google typing, there are two options. One will give you a halanta vyanjanam and one will give you a purna vyanjanam. Because when I typed initially, it was giving me purna vyanjanam. So I was confused where I am getting that halantam vyanjanam, which I needed. So what is the difference between these two, sir? Halanta vyanjanam and purna vyanjanam? Vyanjanani are always halantam. They are not complete swaras, not complete alphabets, unless and until they are added by swara. Agreed. Swayam rajante iti swaraha. Yes. So they don't need any help for pronunciation. Correct. But anvagaha bhavati vyanjanani. Anvagaha sarva swaranam sahayam swikurvanti. Correct. So it goes along with the swara for its proper pronunciation. You have a
ka, ka, ki, ku. It's all swaras. Correct. Right? But you don't need a help of say ikara or ukara or rikara to pronounce a. Yes. A is independent of ikara and ekara or ukara. Okay. You said Purna Anuswara, and that's the reason I'm just getting here. Huh. That's why we are using in Sananta pipati iti we are using. No. That is different. If there is an idagam bhavati, there's a different issue. There is a whole chapter of idagam there. We'll touch in case we have the time there. Astu ma'am. You have time, we can go or we can stop. Upadha, last one we'll take. Okay. Aloantyat purvam upadha. This last was first one letter. It's not the end letter, but the last but one. When you say in the Rama, it is ra, a, ma, a. So makara will be an upadha. In the dhatu, if you say pat, so pa, ip, a, it. So akara will be an upadha. Likha, la, I, kha, ikara will be upadha. Not the last, but just previous varna before the last varna. Aloantyat purva upadha. It is sutra. Al, what is al? Akara from 14 sutras. 14 all sutra. the All aksharas swaras and all 14 vyanjanas are pratyas. all combined together. aksharas. All akshara. All Vyanjana. No, No, all swaras. all Swaram swaras. also there. Swaram also there. Starting with ayuna, akara, ending with hal. Al. Three. So al. Chaturdasha pratyahara. Chaturdash sutrani. Sutraha. Sutrani. सभी आ जाएगा हल सभी all सबका। varnas त्रयस्त्रिंशत् व्यंजनानि तथा नव स्वराः. नवस्वर। So upada here is the vyanjana. Last but one. The last vyanjana before the last swara. No. Vyanjana matra evani. So if you say pat, it is pa, a, and it. No, let's take these examples that are given here. Okay. Rama, the last vowel is a, and ma comes before that, so ma becomes the upada. Yeah, ma becomes the upada. And Parvati, akara will be T. Akara will be T sangya ka. T, yes. And in this Parvati, E will be the T sangya. And Ta will be the upada. उपदा अस्ति। अवगन्तुं शक्यते इदानीं? 100%. So the last one is T. Last but one. Last वर्ण last देखिए T and last but स्वर one देखिए is यहाँ पर, ठीक है ना? upadha. आपको देखिए टी में क्या देखना है, आपको लास्ट स्वर को पकड़ना है, उसके बाद में जो भी आएगा वो सभी टी संज्ञक में अंदर में आ जाएगा। जैसे मनस शब्द हम लोग ने लिए, तो मनस में क्या है, देखिए मनस के बाद में अकार के बाद में सकार भी है, व्यंजन है वो, तो केवलम अकार को हम लोग टी नहीं बोलेंगे, अस को टी बोलेंगे, अस को टी बोलेंगे, ठीक है। रमाम में आम को टी बोलेंगे। और यहां भी आप देखिए मनस आप शब्द लेंगे तो उसमें उपधा में अकार होगा, ये यहां पर जो है वो उपधा हुई, लास्ट बट वन। Oh, so irrespective of whether it is the Swara or Vyanjana Vyanjana, That is what I was telling. It is not only the swara or it's not only the Vyanjana. That is what I was telling when you were telling about that makara and takara. Correct. If you look at the example, manas is a is the upada signa. Upada, is it? Okay. A is the upada signa and as is the T.
And in Pushpa, pa will be the upada. हाँ, Pa will be upada, a will be T. आ will be T संज्ञक वर्ण है. Okay. Got it. इतस्मिन् सन्देहः नास्ति. Na, na mode. Na So, Mahadev. E and Upada are very important topic to understand, because when we'll be doing the Rupani, Puganta Laghupadasya इति सूत्रेण लघु इकस् उपधा भवति. लघु इक् यदा उपधायां लघु इक् भवति तस्य गुणादेशः भवति. Okay, so that is what I have told. लिख तो ल इ ख, not ख इक. So the E is ह्रस्व. And लेखयति, लेखयति लघु इकस्य गुणादेशः. Okay. Any questions? No. सर्वे सम्यक् अवगन्तुं शक्नुवन्ति इति मन्ये. Am Mahadev. But lik is converted into lake. That is again we need to understand, sir. That will come to know when we'll learn to form the Rupani. Yes, sir. Like who will become Bho first and then Bhava. So Bhu Dhatu Ho Bhavati Katham Bhavati. So we'll take the Rupam and steps, and you know all the sandhis, but just have to be put into practice now. तो भू होता है, वो होता है और उसको भव आदेश होता है. ओ का भव आदेश नहीं होता है. भू को भो आदेश होता है और उसके बाद में अयादि संधि से भव होता है. भव होता है. ओ ठीक है. भू को भो आदेश होता है और उसके बाद में एचो यवायावह से भवती होता, भव होता है. Same as ni nay dhatu, Mahodaya. Ni nay dhatu. Nayati, niyate. No, nayati, niyate is two different rupa. Both are, it's a ubhayapadi dhatu. So nayati, niyate have two different atmanepadi and parasmayapadi rupani. But here also I iti ni. Ni dhatu, it doesn't have an upadha. Oh. Right? It's a swara asti. Ekameva. Eka swara asti. So when the dhatu ending with a swara, you don't have to find an upadha. When the dhatu ending with a consonant, then only you check the upadha. Because we can do work only on the vowels, swara, not on the vyanjanas. Whatever cut and paste we have to do, changing we have to do only on swaras. Okay? Astu Mahodaya. तर्हि वयं समापयामः.